keep the door open for improving the volumes and intensity, and we can push them and push them and push them. It is one point of it. Another point of it, that this plateau typically happens when we do more specific workout. We have to revisit strength and conditioning more often. Because if we improve on strength and conditioning, our opportunities to improve in skills and specific fitness will improve, and then we can improve in performance. If we do not revisit strength and conditioning, we will hit the plateau, and even if we try, after years of ignoring strength and conditioning, it may well bring injuries in. That is another reason. So I hope I answered your question. Thank you, Professor. You nicely tackle the questions. That's all for Professor's session. Professor Alexander, I thank you on the behalf of all the participants, and as well as my personal behalf and behalf of my university, that you accepted my invitation. Thank you very much, Professor. You rightly said we need to be more specific, because I have also served as a volleyball coach, and I know sometimes our enthusiasm forget the principle of sports training, and due to which there are problems while training. Thank you, Professor. Thank you, Dr. Gish. Thank you, everyone. Thanks again. Thank you. Our next my pleasure. Thank you, sir. Thank you. Our next speaker is Dr. Neha. Dr. Neha is an associate professor in Department of Kaya Chikitsa at Sri Krishna Government College and Kurukshetra. That is the Ayurveda University. I would say only Ayurveda University in Haryana. That is Government of Haryana State University, and she did her PG from Paparola, and serve as a medical officer in a very good publication in journals, and also she has published 2 books on Ayurveda and well as application of Ayurveda in sports. I thank you, madam, for accepting our invitation and to be the part of this. Thank you. Now it's over to you, ma'am. Are you able to listen me, Dr. Neha? Yes, sir. I'm able to listen you, but sorry to say, my camera is not working presently. No problem at all. You can carry on with audio. Okay, sir. Presentation. Yeah, no problem. Okay. Are you able to share screen? Yeah, I think. No problem. We can go for we can go for meet Google's form, na? So that is more comfortable. No need to. Let's continue with this. Screen sharing also. Okay. No problem, ma'am. You please carry on. Okay. Thank you, Dr. Gesper and the academic branch of BPS for giving me an opportunity to share my views. Though I am not from the field of sports, but still I will try my best to provide the information regarding the sports medicine. As we all know that the sports medicine always deals with the issue of the fitness and the sport injuries of a sport person and the mental health. So I will try my best to share my views how Ayurveda can help the sports person. Sir, I am trying to share my PPT. Are you listening? Yeah, we are able to listen you, as well as your screen is very much visible to us. Okay, sir. आप इसे फुल स्क्रीन पे कर दे मैम, और बायलिंगुअल रहेगा तो हमारे पार्टिसिपेंट के लिए वो भी अच्छा है. ओके, थैंक यू सर. ओके मैम. इसको आप फुल स्क्रीन पे कर ले मैम. या सर, आई एम ट्राइंग. गिव मी अ मिनट. नीचे एक्सट्रीम जहां पे नीचे कुछ ये परसेंटेज लिखी हुई है, नीचे राइट में बॉटम में, हाँ ये दिस वन. साइज नहीं मैम, या तो F5 से भी हो जाएगा. वैसे ये नहीं सर, गिव मी अ मिनट.
I'm trying to first make the slideshow. हाँ नीचे क्या है मैम, नीचे जहाँ 82 लिखा, हाँ यही वाला, इसे इधर और इधर लेफ्ट में, हाँ ये Yes. प्लीज। Okay. हाँ जी, हाँ जी, अभी आपकी क्लियर। हाँ जी, थैंक यू। Okay, sir. ओके, यू प्लीज कैरी ऑन मैम। Okay, sir. So today my topic is Ayurveda as a sports medicine. As we all know that the sports medicine is a branch of medical science which deals with the treatment of the injuries related to the sports and the games. It is relatively a newer field of study which includes the study of physiology, biochemistry, biomechanics, developmental mode for the sports, orthopedics, trauma, and physiotherapy. It also includes psychology and dietetics. It has been the part and the parcel of human life since time immemorial. देखिए आयुर्वेदिक फील्ड से हम स्पोर्ट्स पर्सन्स को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं. द फर्स्ट वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द डेवलपमेंट एंड द फिटनेस एस्पेक्ट. द फिटनेस रिलेटेड टू द body, both physical as well as emotional. Secondary thing, diet regulation, which are prescribed in the Ayurvedic science, also plays an important role in maintaining the physical fitness as well as for the responsible for the mental health of a person. It also gives knowledge how to strengthen your body, how to increase your endurance, and the rehabilitative procedures from the sports injuries has also been mentioned in this text. Ayurveda has two aspects, preventive and curative. The definition of health is very well explained in the text of Ayurvedic medicine. It has been given in the form of some dosha, some agni, some dhatu malpriya, means equilibrium of the dosha, agni and dhatu. The doshas we take as vat with kapha, agni in the form of digestion and all the physiological procedures occurring in our body. Some dhatu means balancing of the tissues, mal kriya, prasan atma, indriya mana, prasan atma. The Ayurveda focuses on physical fitness as well as the mental health. So they have given emphasis on the both, on the physical fitness of the body and the fitness of the mind also. So they have given in the form of some dosha, some agni, some dhatu, mal kriya, prasan atma indriya mana, swasth इत्यादि दिए थे. तो इसे ही उन्होंने स्वस्थ पुरुष की एक परिभाषा देते हुए एक हेल्थ की डेफिनेशन दी है जिसे WHO भी इसी तरह से एक्सप्लेन करता है. The two aspects Ayurveda focuses on preventive and the curative medicine. The preventive means स्वस्थ रक्षण, मतलब अपने हेल्थ की रक्षा करना. आतुरस्य विकार प्रशमनम च. आतुर मतलब एक रोगी के विकार उसके डिजीज को ट्रीट करना. इन दोनों एस्पेक्ट पर, मतलब क्यूरेटिव एस्पेक्ट पर भी आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. It deals with the body as a whole. I have explained in the definition of health that it deals with the physical health as well as the mental health. It is an important health science which can play a role in maintenance of a health of a sports person. Now, the important point is why Ayurveda for sports when we have another contemporary science of medicine in this field which has provide elaborative treatment, elaborative dietetics, then why is the need of Ayurveda for the sports? As we all know that there are good facilities of management in the contemporary science of medicine. There is reoccurrence rate of pain, especially due to musculoskeletal injuries, as high as 80%. Persisting chronic symptoms of injuries also oblige athletes to discontinue the game. देखिए जितनी भी मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज या इंजरीज ड्यू टू ट्रॉमा इन स्पोर्ट्स पर्सन में होती हैं, उनके सिम्टम्स क्रॉनिक फॉर्म में बहुत देर तक स्पोर्ट्स पर्सन के परफॉर्मेंस को हैम्पर करते हैं. तो इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छा, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. इट हैज अ हायर रेट ऑफ, as we all know that
Higher rate of side effects of allopathic medications and post-surgical complications always occurs in the sports person. The basic principles of Ayurveda are applied in the management of various stages of injuries in the field. In acute cases, Ayurveda plays an important role. Whereas in cases of chronic sports injury, proper samprapti is to be made depending upon the doshas. Adhishtan and Srotas and samprapti, Vigatan Chikitsa or therapy should be done. In Ayurveda, the treatment is given on the line of pathogenesis. We always focus to treat the pathogenesis and not only the symptoms of a patient. Now, here the concept of sports injuries mentioned in the Ayurvedic texts are Bhagat, which we have told as a fractures and dislocations, Vran, wound. Vran is short, that is the inflammatory conditions due to any disease in the body, any kind of trauma, Snayugat Vat, tendon and ligament injuries. Sports-related injuries are also mentioned in Ayurvedic texts, like Bhagan bone fractures, joint injuries, Masgat Vata, strain and fatigue syndrome in the form of Snayugat Vat. Basically, Snayugat Vat deals with the ligament, nerve and bursae injuries. All the symptoms which occurs due to the ligament, nerves and bursae injuries comes under the Snayugat Vat in our Ayurvedic text. Kandragat Vat, that is the injuries related to the tendons like tendinitis. It causes a lot of pain and hampers the muscle movements also. Common sports injuries also come under this point. Knee ligament injuries, very well mentioned in our text. Shoulder rotators of injuries, ankle joint sprains, muscle cramps are also explained. So it not only deals with only Bhagan, joint injuries, sprains, fatigue, it mostly covers all the problems faced by the sports person due to their any kind of trauma. Those physical treatment protocols in Ayurvedic sports medicine are management of the injury. The prior most, we have to first manage the injuries first. Next is the rehabilitation. This is the most common problem faced by every sports person after recovery from the injury. The third most important, active and passive mobilization. And next one is the strengthening of the muscle, ligaments, tendons, joints, and overall strengthening the body. The various modalities which Ayurveda can provide in the field of sports are, the very most important is Prakriti, Dashvida Pariksha. Various regimens are explained in our text like Dinacharya, that is the daily regimen which one should follow. Ritucharya, seasonal regimen, as 6 ritus are explained in our text, and one should follow the complete regimen to stay fit for that particular season. Diet plays an important role in fitness of a body and how to eat, when to eat, and what not to eat. The all fundamental principles of dietetics are explained in our text. Panchakarma therapy, Maram therapy, Agni Karma and Rakt Mokshan. These are the para-surgical procedures which are used in treating the injuries due to sports. Then the Rasayan therapy, the Shemani drugs, these are the drugs which are explained. I try to explain it at the last. Non-steroidal performance enhancing drugs also. In which form we can give or we can help a patient? We can give medical treatment in both external and the internal form. In the internal medication form, we can give oils, we can give herbs, we have multiple formulations which we can give in the form of internal medication. Basically, the medications we give in the form of oral form, they try to boost up the tissue healing. They play important role in tissue healing. They alleviate the pain. They strengthen the injured part and the body as a whole. And many other issues. They also deal with the
with these internal medications. External medications हम जो patient को देते हैं उसके role क्या रहते हैं? Main inflammatory pain को relieve करना, to alleviate the pain, joint strengthening, muscle strengthening और उनसे related जो मस्कुलोस्केलेटल हमारे सिस्टम है, उनके जॉइंट्स हैं, उनके फंक्शंस को प्रॉपरली इनेबल करना, ये हमारी एक्सटर्नल थेरेपीज का मेन रोल इसमें रहता है. The first and the foremost point in any person, and especially I think fourth person, is how to maintain a discipline. So discipline is the foremost aspect of training in the sports. Ayurveda medicine gives best schedule via Dinacharya, that is the daily regimen, and the Ritucharya and regular Panchkarma. All these help in maintain the excellent health. How this Dinacharya and Ritucharya help in maintenance of health, I will try to explain it a little bit. That there are few regimens given in the Dinacharya procedure, like early waking. As we all know that we should wake up in the pre-dawn time, because this is the time when Vata dosha, because the Ayurveda mainly have a fundamental principles of dosha. So this is the time when Vata dosha is dominant, and energy present in the environment will make it easy to wake up. The second most important regimen which one should follow is the cleansing of your senses. We know we always get early in the morning and do the toothbrush. In the earlier times also, it is advised to do the datun. So these, and to clean your face with and the eyes with the cold water. One should always clean your eyes with the cold water, not with the warm water, as mentioned in the Ayurvedic text, as it can diminish our eyesight also. So one should do cleansing of your senses early in the morning after waking up to enhance the sensory system of our body in the morning hours. Then there is advice to drink water early in the morning and then go for bowel evacuation, so as to detoxify the body from your previous digestion occurred is due to the food and metabolism in your what you have eaten the yesterday. Then do exercise and yoga, do oil massage. There is a massage technique not due with oils also, but with the dry herbs also, which I will try explain later. Then there is a process how to do bathing in winter season and in the summer season. These regimens have very well explained in the text, and one should follow all these because this provides various benefits like prevention of the diseases, maintenance of our health. This helps in maintain the certain disciplines of the body and the mind. When जब आप कोई भी काम एक peculiar time पर रोज करेंगे, तो obviously this will help to regain your health. It also helps to make your connection with the nature. As we early wake up in the morning, we used to do exercises in the open. So it helps to connect with your nature. And the foremost important, it helps to relieve the stress also. It promotes the longevity, help in maintenance of the health. As we all know that there is a prescription of a yoga in the Ayurvedic text that one should perform yoga, as it helps in reducing the weight. It has a cooling effect of the body. It helps to improve your basal metabolic rate. So these are the important points which one should follow in the Dinacharya. Now, the next concept, which is the foremost important given in the Ayurvedic text, is the concept of Prakriti. Anybody can be an athlete, but knowing certain physical traits, selection of a person for particular sport benefits immensely. Physical and the psychological makeup of a person plays an important role in many things. This might be just simple work or complex activity. What one is impacts on everything. When it comes to the selection of a career like sports person, it becomes important. As per Prakriti, human race can be classified into vast, space, and soft, and their combination. These remain unchanged till the death of an individual. Prakriti is decided at the time of conception only.
It is elaborative, comprehensive, accurate representation of anatomy, physiology, and the psychology of the body. Each person is born with this inbuilt and it is unchangeable. This is very most important point, that the prakriti of a person is made at the type of conception. So if we want to change it, it is unchangeable. So depending upon the event, a Vata prakriti person can be a better athlete than a Kapha prakriti person, example athletics. Similarly, a person specializing in chess should be a Kapha predominant person. देखिए, प्रकृति एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो किसी भी टैलेंट डिटेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. I was studying in one journal that genetics also play an important role in talent detection. So this is a kind of concept which Ayurveda has also explained. The talent identification process has been a subject of study not only for sports scientists but for sports sponsors and organizations also since decades. There are 7 different types on the basis of 3 doshas and their combination. The main 3 doshas are Vata, Pitta, and Kapha. There is a very well explained anatomical composition of a person on the basis of a dosha. I will try to explain it little bit. Like a Kapha prakriti individual have a firm and compact joint and musculature and believed to the strongest in comparison to Vata and Pitta prakriti. Vata और Pitta prakriti के comparison में अगर हम Kapha prakriti पुरुष को देखते हैं, एक individual जो Kapha prakriti predominance है, तो उसके joint firm, compact, strength of the body उसकी अदर प्रकृति Vata और Pitta prakriti individual से ज्यादा होगी. सेल्फ कंट्रोल, अनहरिडनेस, गुड डिसीजन मेकिंग, ये सारी कैपेबिलिटीज एक कफ प्रकृति इंडिविजुअल में होती हैं. तो इस तरह से अगर हम प्रकृति का एनालिसिस पहले से ही कर लें तो हम उस पर्सन के लिए कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी उसको अच्छे रिजल्ट दे सकती है, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस स्पोर्ट्स में वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं. इसी तरह से देखा जाता है कि पित्त प्रकृति इंडिविजुअल्स जो होते हैं, दे आर इंटेलिजेंट, विगरस, fearless, making wise decisions. So, and there is a word get in the text like धीमान स्वेदित रोशनन. तो धीमान मतलब इंटेलिजेंस. तो इन इंडिविजुअल्स को हम ऐसी गेम्स में के लिए प्रमोट कर सकते हैं जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा लगता है. इसी तरह से वात प्रकृति इंडिविजुअल्स को हम ऐसी एक्टिविटीज में प्रमोट करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज के लिए एडवाइस कर सकते हैं जिनमें ब्रिस्कनेस बहुत ज्यादा चाहिए, लाइक एथलेटिक्स. एनी एथलेटिक्स जिसमें ब्रिस्कनेस बहुत ज्यादा चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, इनमें वात प्रकृति इंडिविजुअल्स को प्रमोट किया जा सकता है. इस तरह से सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड साइंसेज दे हैव गिवन अ प्रकृति. इन्होंने एक नया कंसेप्ट अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, दैट इज द इश्यूएंस ऑफ प्रकृति कार्ड. सभी इंडिविजुअल्स के लिए, द होल पॉपुलेशन, वन शुड गेट अ प्रकृति कार्ड. इसमें उस पर्सन की प्रकृति पहले से ही एनालाइज करके डिटेल प्रकृति मेंशन्ड होगी और उसके रिलेशन में क्या उसको डिजीजेस हो सकती हैं, क्या उसे प्रिवेंशन रखनी चाहिए, क्या उसकी डायटेटिक्स हो सकती है. उस कार्ड के एनालिसिस पे इस चीज को फर्दर एक्सप्लेन उस पेशेंट को या उस पर्सन को किया जा सकता है. There is always a detailed explanation of a दशविध परीक्षा of a person or any personality जिसके बेसिस पे हम उनकी डिजीज को क्योर कर सकते हैं, उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उन्हें एडवाइस कर सकते हैं. The 10 points which covers in the दशविध परीक्षा are प्रकृति, that is the body constitution. I told it earlier that the prakriti is of basically 7 types, Vata, Pitta, and Kapha. And in the combination, it is of 3 and 4 types, Vata Pitta, Pitta Kapha, Vata Kapha, and Tridoshaja. तो इस तरह से प्रकृति का एनालिसिस करके हम उस इंडिविजुअल की बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी फिजियोलॉजी, इस सब को एनालाइज करके एंड द पर्सन इज प्रोन टू व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस, अर्लियर ही हम ये सब चीजें इसको बता सकते हैं. The second one is विकृति, disease susceptibility. What kind of injury of अगर कोई sports person या any kind of person अगर उससे किसी तरह का disease है तो उसके लिए हम विकृति एनालिसिस करते हैं. The third one is the scar. It is the quality of tissues.
देखिए इसका बहुत इलाबोरेट आगे वर्णन किया गया है सार. The examination of a SAR helps to identify the suitable physical constitution. 8 SAR has explained in our text. त्वक, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र एंड ओसा. जो 4th पर्सन है उनमें कौन से सार, किस तरह के टिश्यूज हम लोग देखने को मिल सकते हैं कि स्ट्रेंथन ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यूज. दिस इज अ अस्थि सार. Their body is more strong and firm. The person who is Asthi-sar has a strong and firm body. The person who is Sattva-sar are highly enthusiastic. Mars, Majja-sar and Shukra-sar persons have a good sense. The highly unsuitable sar, जिनमें हम कहते हैं सुकुमार प्रकृति, जिनमें बेरेबिलिटी किसी भी चीज को लेकर बहुत कम होती है, वो होते हैं त्वक्सार, रससार एंड मेदसार. A complete characteristics or each sar is explained, and on the basis of which we can analyze what sar a person has. That in future we can advise either a sport or which type of a game is compatible for his personality. Bal or a strength is based on the strength of a power, body or sense organs or body tolerance and digestive power. Next one is Sehnan, compactness of the body, Praman, anthropometry of a body, Satamya, adaptability. Today we see that the people get adaptable to the things which are not good for their body. So there is also concept of adaptability. There is a concept of pathe and apathe in our text. Pathe means which are suitable, which are good for our body, and apathe means which are not beneficial for our body. If anything which is apathe has become susceptible or satamya to our body, there is also a concept how to leave it. We should not leave it in a sudden. We should not leave it at one moment. There are particular principles how to leave the apathe. Then psychological stamina, a good stamina, a medium or a low one. This is also explained. Digestive power, ahar shakti, vyayam shakti, physical strength. A person has a good physical strength, medium physical strength or low physical strength. So there are also parameters how to determine the physical strength in Ayurveda. Then age and rate of aging is also very well explained. Of all these selection criteria, 3-4 are important in selection or in selection of a person for a sports activity. The main one is the Prakriti, then the Sar, Sehnan, Praman, Satme, Satya and Vay and Vyayam Shakti. These plays an important role for sports persons also. There is a mentioning of the new modality, that is the Panchkarma modality in our Ayurveda, which can help and prove very beneficial for a sport. This is a popular due to instant magical results and it prevents the reoccurrence of diseases. Sport injuries require curative, rehabilitative and preventive measures. Our body takes its own time from recovery for any disease. In chronic pain due to trauma, Raktamokshan therapy gives instant relief from the pain and prevention and effusion of blood in that area. It is one of the parasurgical methods explained in Ayurvedic text which provides instant relief in the tissue injuries due to the trauma from sports. The types of Panchkarma explained are pre-Panchkarma therapies, main Panchkarma therapies and allied Panchkarma therapies. Pre-Panchkarma therapies are Snehana and Vedana. Snehana means massage therapy. This is not just a single massage which we usually prescribe, that a massage with oil. In Ayurveda, massage with medicated oils is prescribed for various types of diseases also, as well as the injuries and for physical fitness also. So different types of massages are explained for different purposes. Then other one is the Swedan or the steam or sedation therapy. The main Panchkarma therapies explained are Vaman, Virechan, Vasti, Nastya and Raktamokshana. Allied Panchkarma therapies are Snehana, Taildhara, Shirodhara, Shirovasti, Grivavasti, Kativasti, Januvasti and
Agnikara. I have mentioned some beneficial therapies for fourth person. For regular use, to maintain the good physical and psychological conditions, an athlete can use this therapy as a daily routine. Snehana, Vedana, Basti, Shirodhara, Marm, and Nasya. These therapy has benefits of improving endurance and stamina. It helps in improving the flexibility of the body. It improves concentration and focus. It reduces the anxiety, fear, anger, tension, and it reduces the chance of overuse injuries. देखिए ये जितने भी पंचकर्म प्रोसीजर्स बताए गए हैं आयुर्वेदा में या प्री पंचकर्मा प्रोसीजर्स बताए गए हैं, they play different role in different type of treatment. I will try to explain. Like according to body type and climatic conditions, woman, viration, vasti, anyone, इन तीन में से हम कुछ भी प्रिस्क्राइब पेशेंट को कर सकते हैं. It helps in benefit the rejuvenating the body, preparing the body for the training and the event. It helps in providing or boosting the immunity, very important role. And it also provides resistance power. It plays an important role in detoxification of the body and weight reduction. पंचकर्मा प्रोसीजर्स प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन वेट रिडक्शन. अगर हम कहें कि हमें टाइम बेस्ड वेट रिडक्शन करना है, कम टाइम है, किस तरह से वेट रिडक्शन होगा, उसका बॉडी पे किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट ना हो, हमारी फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहे, इम्यूनिटी बूस्टिंग कैपेबिलिटी बॉडी की उसी तरह से मेंटेन रहे, तो ये पंचकर्मा प्रोसीजर्स जो आयुर्वेद में बताए गए हैं ये बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले करते हैं. और इसके साथ साथ कुछ पैरा पंचकर्मा प्रोसीजर्स हैं जो कि इंजरीज से रिकवरी के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं, लाइक कटिवस्ती. इट हेल्प्स इन रिलीविंग द पेन एंड ऑल्सो इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन टू द इंजर्ड एरिया. दे ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन रिलैक्सिंग द माइंड लाइक नस्या थेरेपी, शिरोधारा. The most important part is it improves the quality of life and they maintain the good health. तो इस तरह से पंचकर्मा प्रोसीजर किस तरह का किस पेशेंट के लिए, किस पोस्ट पर्सन के लिए हमें सिलेक्ट करना है, ये पंचकर्मा स्पेशलिस्ट ही डिसाइड करते हैं. इंजरी के केसेस में भी हम इस तरह की थेरेपीज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की थेरेपीज का सबसे बेनिफिशियल एक रिजल्ट मिलता है कि फास्टर रिकवरी. ये बहुत जल्दी रिकवरी करने में हेल्प करते हैं पेशेंट को. रिहैबिलिटेशन एंड इन मैनी कंडीशन हम सर्जरी को भी अवॉइड कर सकते हैं. हाउ अभ्यंग, अभ्यंगा मीन्स मसाज, स्नेहन एंड स्वेदन आर बेनिफिशियल. दे प्रमोट गुड हेल्थ. दीज ऑल, ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं ये हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंट करते हैं मेनली मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस और हमारे जॉइंट जो मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज के लिए प्रोन होते हैं ये उसको भी प्रिवेंट करते हैं. It helps in providing the nourishment to the external body. Massage with various medicated oils like उद्वर्तना. उद्वर्तना थेरेपी का आयुर्वेद में बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है. हम इस प्रोसीजर को करते भी हैं. मेडिकेटेड ऑयल से मसाज की जाती है, नॉट जस्ट सिंपल ऑयल भी. तो इफ यू फॉलो द दिनचर्या, देयर इज अ रेजिमेन ऑफ रेगुलर मसाज. आप जो घर पर कर सकते हैं मसाज, उसका प्रोसीजर बताया गया, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर मसाज because it is done with the medicated oils and the oils prepared with herbs. The other procedure mentioned is udgharshana. In some disease conditions, there is contraindication of oil use कि हमें उनमें मसाज ऑयल से नहीं करनी. तो ऐसी कंडीशन में ड्राई हर्ब्स के पाउडर्स के साथ मसाज किया जाता है. इसे कहते हैं उद्घर्षणा थेरेपी. It alleviates the vitiated cough and dissolves the fat and makes the body strong and fit. These are advisable to strengthen the calf and thigh muscles. Normally सबको पता है मसाज करते हैं, but there is also technique how to do the massage. मसाज जब भी स्टार्ट की जाती है तो it should be started with the extremities and then it should move. Then हमें अपने हाथ मतलब inside of the body की तरफ मूवमेंट को बढ़ाना होता है. तो स्टार्ट में जब हम एक्सट्रीमिटीज पे मसाज शुरू करते हैं,
it should be done in the linear movement. कोई भी जॉइंट्स है बॉडी के, उनमें सर्कुलर मोशन में मसाज को करना चाहिए। इस तरह से मसाज की टेक्निक भी बताई गई हैं। द मसाज टाइप्स लाइक मर्दना इज ऑल्सो एक्सप्लेन। हियर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ हैंड्स। मर्दना मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स के साथ मसाज किया जाता है while squeezing the muscles after exercises, and there is also technique named उन्मर्दन। इसमें अपवर्ड मूवमेंट की ज्यादा थेरेपीज की जाती है। ये एक क्लिनिशियन ही डायग्नोज करता है कि पेशेंट को किस तरह की इंजरीज में किस तरह की थेरेपीज और उद्घर्षण, उद्वर्तन, मर्दन, उन्मर्दन किस प्रोसीजर को सिलेक्ट करना है। Another type of massage is called as a samvahanam, which can increase the strength by alleviating the vitiated vata and kapha doshas and thus takes away tiredness and fatigue. It helps in regaining the vitality in the muscles. The massage with feet, that is a padaghat, it is helpful for making the muscles stronger and stress resistant. The medicated oils used for massaging have potential therapeutic effects not only for improving fitness but also for curing injuries. It pacifies the abnormal vata, renders the body soft, and clears the accumulated waste in the body. Snehana promotes the body strength and the integrity of the senses. The massage therapy has how it is helpful for the body. It increases the arterial blood flow to the muscles and skin. हमारी सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को स्किन और मसल्स की तरफ ये इसको इम्प्रूव करते हैं। Soothe and stimulates the nerve. It increases the power and the tone of the muscles, tendons and ligaments. The next therapy is a Svedana therapy. Svedana means sedation therapy. It helps in dissolving the waste products of the metabolism and expels out through sweating. बेसिकली इसे हम स्टीम थेरेपी, एक लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, स्टीम थेरेपी दी जाती है जो कि हेल्प करती है बॉडी में डिसॉल्व जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से बाहर एक्सपेल करने के लिए। तो फर्स्ट देयर इज अ मेंशनिंग ऑफ स्नेहना कि मसाज के बाद ही, मसाज थेरेपी के बाद ही, स्नेहन करने के बाद ही स्वेदन कर्म को करना चाहिए। ये लोकल भी हो सकता है बॉडी में और complete Svedana therapies are also prescribed. Local hypothermia produced during Swedan improves the local blood and lymphatic circulation and thereby helps in decreasing the chronic inflammation in the injured site. किसी पेकुलर साइट पर जहाँ पर टिश्यू इन्फ्लेमेशन है, किसी तरह की इंजरी की वजह से, स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से बार बार इंजरीज कॉज हो रही हैं, तो वहाँ पर लोकल साइट पर ही इस तरह की सेडेशन थेरेपी दी जाती है। It relaxes the local musculature by the physical effect of heat and reduces the stiffness and the spasm of the different muscles, increases the flexibility of the body. It increases the rate of transdermal drug delivery. देखिए ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी में बहुत अच्छा इसका रोल प्ले करता है, तो जिससे कि ड्रग एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी बॉडी की बढ़ जाती है, जो कि हमने स्नेहन कर्म के टाइम पर यूज की थी। उस तरह की ड्रग्स जो कि सुपरफिशियली थी, उस तरह की ड्रग्स की सर्कुलेशन इंप्रूव होने से एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी बॉडी में काफी हद तक बढ़ जाती है। Then in chronic and repetitive soft tissue injuries during various games, various Swedan like Nadi Swed, we have mentioned in the picture of I've tried to mention the Nadi Swed here, Valuka Swed, that is the Valuka Swed. Dhara Swed are very effective. In chronic muscle wasting neurological cases, Shastik Shali Pind Swed, Godhum Pind Swed are helpful for stimulating the neuromuscular function. ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो सेडेशन थेरेपी है, जो स्वेदन कर्म है, वो हम स्टीम से ही करते हैं। ड्राई स्टीमिंग भी की जाती है इन द फॉर्म ऑफ, जिसको हम बोलते हैं कि पहले क्या करते थे, रेत को गर्म करते थे, तो इन द फॉर्म ऑफ सेंदव, लवन और मेडिकेटेड हर्ब्स को गर्म कर उनके एक पोटली पिंड स्वेद बनाकर एट द साइट ऑफ
टिश्यू इंजरी उससे सुडेशन थेरेपी दी जाती है. They are best treatment for disarranged VAD doshas. It can be used for all vitiated doshas. The most important is the Basti. The Basti here I have shown in the picture. This is the type of Januvasti and there is a Kativasti. These are best treatment for a Vata dosha. Vata is dosha is responsible for the ruja, which is we called as a pain. तो जितना भी कभी भी किसी भी इंजरी की वजह से या किसी भी डिजीज की वजह से जब भी बॉडी में कहीं रुजा होती है तो विशिएटेड दोषा वाता ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो उसको एलिएशन के लिए जो थेरेपी की जाती है दैट इज अ बस्ती. So it nourishes all the dhatus, relieves the stiffness and contractions and adhesions. Medicated oils के साथ इस तरह से बस्ती ट्रीटमेंट एंड द इफेक्टिव एरिया जहाँ पर कि इंजर्ड साइट है, पेन है, इन्फ्लेमेशन है, इस प्रोसीजर को रिपीट किया जाता है. ये इट इज इफेक्टिव इन हीलिंग प्रोसेस ऑफ torn ligaments, tendons and fractured bones. Localized types like Kativasti, Januvasti, and there when it is done on the griva, on the neck area, Grivavasti, they are more helpful in tissue injuries and also in the strain of the spine. The next Panchakarma procedure is the Nasya. Here in this procedure, drug is administered through nose in the form of drops. Okay, medicated oils को in the form of drops nostrils में इंसर्ट किया जाता है. इट नरिशेस ऑल द सेंस ऑर्गन. किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमारे सभी सेंस ऑर्गन्स का प्रॉपरली वर्क करना बहुत जरूरी है. तो दिस इज द सिंगल पंचकर्मा प्रोसीजर विच एक्ट ऑन द माइंड. It plays important role in proper functioning of the sense organs. The nasal mucosa is the only location in our body that provides a direct connection between the central nervous system and the atmosphere. So, the drug administered to the nasal cavity rapidly travels through the cribriform plate into the central nervous system. Nasya is an easy and effective modality in the management of foot injuries also. Here are the benefits of Nasya. It strengthens the nasal passages. It helps in relieving the headache and migraine. Treats the allergies like sinusitis. Help in clearing the mucus blockages. Opens the blocked channels of the head. It's helpful in treating the nasal infections. It's the best remedy for any kind of nasal congestion. Mainly, it also helps in relieving the stress. The next para Panchkarma procedure is Rakta Mokshana. It is a bloodletting procedure. Bloodletting is mentioned in Ayurvedic texts since ages. The different techniques of bloodletting has been explained through leeches, through cupping therapy. So, basically, it helps to relieve the local inflammation, pain, and swelling. Bloodletting helps in reducing local inflammation, pain, swelling. It removes the damaged blood cells and helps in formation of new blood cells locally as well as in the system as a whole. So, it's basically helpful in neovascularization of the injured or the inflamed area. Leech therapy is also helpful in acute injuries or in the inflammatory injuries. The saliva of leech contains enzymes which work as anticoagulant, diuretic, and antimicrobial. It enhances the wound healing and it also has the immunomodulatory effect. This is a Panchkarma procedure named as a Shirodhara. It's helpful in relieving any symptoms due to stress, anxiety. It stabilizes the mental faculty. It's helpful in increasing the serotonin levels in the blood, helpful in inducing sleep. किसी भी इंजरी चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, the sleep is the foremost factor
जो कि बहुत जल्दी इफेक्ट होता है. तो शिरोधारा plays an important role in relieving mental stress. Any kind of psychological distress related to sports can also be relieved by this procedure. Medicated oils and medicated oils with milk and herbs, and oil is prepared, and then in this form Shirodhara procedure is done. How therapeutic Ayurveda can help a sports person? It can help a sports person in various health problems, in knee injuries and various recoveries like knee pain, anterior cruciate ligament tear, quadriceps tendon inflammation, medial meniscal injuries, articular cartilage injuries, ligament injuries, patellar pain and repeated dislocations. इनमें से कुछ इंजरीज ऐसी हैं जिसमें कंटेम्परेरी साइंस बोलती है कि हमें सर्जरी के लिए मूव ऑन करना चाहिए, बट आयुर्वेदा कैन बेनिफिट इन दीज पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन. इस तरह की इंजरीज में हमें सभी इंजरीज में किसी जरूरी नहीं कि सर्जरी के लिए ही आगे मूव ऑन करना पड़े. वी कैन ऑल्सो हेल्प अ पेशेंट विद दीज पंचकर्मा प्रोसीजर्स. Shoulder injuries, rotator cuff injuries, dislocation, inflammation of biceps, shoulder plane, clavicle fractures. In back injuries also therapeutic oral medications also play a very important role. And also Kativasi also plays a very important role in lower back pain, sciatica. In sciatica, the procedure commonly done is the Agni Garam. It also plays a very important role. Lumbago, scoliosis, muscle strain, slip disc. हिप एंड थाई इंजरीज में भी हम काफी हेल्प कर सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की. एंकल फुट इंजरीज लाइक प्लांटर फेशियाटिस, हील पेन, मेटाटार्सल फ्रैक्चर्स, एशनिस पेन, ब्रोकन एंकल, sprain एंकल. नेक इंजरीज में काफ एंड शिन इंजरीज, आर्म एंड एल्बो इंजरीज, थंब एंड रिस्ट इंजरीज, मस्कुलर रिजुविनेशन, लॉजिकल एंड माइंड बूस्टर्स. इन सभी तरह की इंजरीज में आयुर्वेदा इज बेनिफिशियल फॉर ए स्पोर्ट्स पर्सन. द नेक्स्ट थेरेपी इज अ मरम थेरेपी. Marmas are considered as a seat of pran or the life element. Thus, they are vital. Injuries to marmas can lead to structural and functional impairment, deformity, and death. Marmas are scattered all over the body, so the knowledge of marmas gives comprehensive knowledge of the vital areas of the body. So there is a therapy for the pain, trauma, and functional impairment. The word marma is used with synonymous as a tender, secret, or vital form. It's an anatomical sign where mas means muscles, sira means blood vessels, sanayu, tendons, अस्थि means bones, and संधि confluence. आयुर्वेदिक टेक्स्ट में 107 मरम पॉइंट बताए गए हैं जो कि बहुत वाइटल हैं. Marmas are the target site of variety of different injuries and disorders during the sports. Because of its complex structure and weight-bearing capacity, it is frequently affected in sports compared to another joints of the body. इस तरह से इसको समझा जा सकता है कि जिस तरह से एक्यूप्रेशर थेरेपी की जाती है उसी तरह से आयुर्वेद में एक थेरेपी मेंशन्ड है जिसे हम बोलते हैं मरम थेरेपी. Here are a picture showing the marmas in the body. The three vital marmas are Hriday, Vasti, and Sira. The main complaints in Maramshat Lakshan. Maramshat means injuries to marmas. जो मेन कंप्लेंट्स रहती हैं वो होती हैं पेन, swelling, stiffness, irritation, and fracture. Regular pressing of marma points, as advised by the physician, helps in relieving the pain, swelling, and other signs of inflammation due to the sport injuries. It also helps in restoring the mobility and function. Basically, this is a manipulation technique
जो कि फ्री रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। द नेक्स्ट मोडेलिटी इज द डाइट। डाइट should be modified as per the individual's requirement. There is need of good nourishment for the fourth person. Wrestling, weightlifting has a different diet requirement, strengthening and the building of muscle mass. देखिए different dietary requirements रहती हैं different फोर्थ पर्सन की एज पर देयर गेम एक्टिविटीज, कि जिस तरह की गेम एक्टिविटीज रहती हैं उस तरह के हमें उन्हें डाइटरी रिक्वायरमेंट एडवाइस करनी पड़ती है। सो ऑल डाइट कैन बी फोर्टिफाइड बाय हर्ब्स एंड भस्मास एज पर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। डाइट is also prescribed on the basis of Prakriti in Ayurveda. So if we have done the Prakriti assessment of a person earlier, we can easily prescribe the diet which one should have and one should not have. Like a Vata Prakriti person are naturally cold, dry, energetic. So they should prefer warm, oily diet with light spices, and few activities are also mentioned that they should not eat late at night, they should not work late at night, they should not eat raw food. Because these persons of Vata Prakriti have a easy sustainability to exhaustion. बहुत जल्दी इनमें exhaustion के signs देखने को मिल जाते हैं. So because they Prakriti wise they are considered as cold and dry, so इनको वार्म ऑयली डाइट विद लाइट स्पाइसेस प्रिस्क्राइब की जाती है। इसी तरह से पित्त कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम प्रकृति देखते हैं पित्त प्रकृति पुरुष, तो इनको हम इस तरह की डाइट एडवाइस करते हैं जिसमें कि बॉडी का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रहे, बिकॉज द पित्त प्रकृति पर्सन हैज अ हायर एलिमेंट ऑफ फायर इन देयर बॉडी। तो ऐसे फूड जो बहुत स्पाइसी हो, हॉट हो, इन पर्सन को अवॉइड करने को बोला गया है। And the one thing, they should eat smaller portion of food several times a day. थोड़ी देर में बार बार खाना लेना के लिए इनको कहा जा सकता है। The next prakriti is a Kapha prakriti. As the Kapha prakriti persons are mostly having habit of overeating, and the products which are heavy, they should avoid it, like dairy products, fried foods. A Kapha Prakriti Purush, either it's a sports person or a person, any person or a patient, one should avoid dairy products, fried foods, heavy food. Warm diet is prescribed for these persons also. There is a mentioning of few drugs which can help a sports person in enhancing their natural performance. They are named as a biosteroids. They are purely of herbal origin. They are mentioned for enhancing the physical power of a person. Certain group of drugs are mentioned in our text in the form of Dashamani, which we called as a Brihiniya Dashamani. The 10 drugs are given in Brihiniya Dashamani, which play important role in muscle building, like Nagar Motha, Koot, Haldi, दारू हल्दी, चिरबिल। इस तरह से जीवनीय गण में आयुर्वेद में कुछ औषधियां बताई गई हैं जिनका मेन जो कि विटलाइजर रोल प्ले करती हैं, जैसे जीवक, ऋषभग, मेधा, महामेधा, काकुली, क्षीर काकुली। देन बल्ले औषधियां भी बताई गई हैं जो कि स्ट्रेंथ को प्रमोट करती हैं। उनमें इंपॉर्टेंट है ऐंद्री, शतावरी, अश्वगंधा, बला और अतिबला। श्रमहर दशमनी भी कुछ ड्रग्स बताई गई हैं जो कि परफॉर्मेंस लेवल को इम्प्रूव करने में काफी हेल्पफुल रहती हैं। ये सभी जो हर्ब्स बताई गई हैं, दे आर नॉन स्टेरॉइडल एंड इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ बायोलॉजिकल हार्मोन्स एंड द एंजाइम्स इन द बॉडी। एक रिसर्च भी की गई है, एक नहीं मल्टीपल रिसर्चेस आई कैन से, कि हम प्रेजेंट टाइम में हर्ब्स को एज अ इन स्पोर्ट्स पर्सन की जा रही हैं। एक स्टडी जामनगर में की गई है जिसमें 2 ग्रुप्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन को के ऊपर की गई, वन विद बल्ले दशमनी ग्रुप ऑफ ड्रग्स एंड अदर विद द प्लेसिबो, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखने को मिले हैं। द ग्रुप विद
Balle Dashamani has shown a highly significant result. Microbiological study revealed a group of naturally occurring substances in many plants classified as a biological steroids that have action similar to steroids. कुछ ऐसी ड्रग्स भी आयुर्वेद में बताई गई हैं जिनके एक्शन स्टेरॉइड्स के समान है लेकिन दे आर बायोलॉजिकल स्टेरॉइड्स. इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, लाइक द्राक्षा, दाड़िम, इक्षु, यव, षष्टिक, फल्गु, गोक्षुर. The rasayan like amlaki, ashwagandha has shown to aid natural holistic immune booster as well as muscle anabolic properties. It also helps to destroy the cell-destroying free radicals produced during the exercise and sports. There is also mentioning of rasayan therapy which is beneficial for a sports person. It is basically a rejuvenation therapy. बहुत अच्छे इस थेरेपी से एंटी एजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं. इट prolongs the aging. It is one of the 8 major clinical disciplines of Ayurveda. Rasayan therapy helps an individual in promoting the longevity, in increasing the memory power, in improving the intelligence, health, youthfulness, luster and complexion. Stronger sensory and motor organ system को भी ये काफी स्ट्रेंथन करने में हेल्पफुल है. कुछ ड्रग्स हैं जिनको कि एज अ रसायन औषध बताया गया है आयुर्वेद में. एज पर एज ग्रुप बताए गए हैं रसायन औषध जो कि स्ट्रेंथन करने में, एजिंग को डिले करने में, हेल्थ को मेंटेन करने में, मेमोरी को इन्हांस करने में काफी हेल्पफुल देखने को मिलते हैं. Here are some of the drugs I am trying to elaborate. In the first decade of life, one should have Gambhari Shiraghrita. In the second decade of life, when there is a need of growth, the drugs like Bala and Amlaki are advised. In the third decade of life, for Chavin, that means the luster, Amlaki, Haridra and Loh are prescribed. In the fourth decade of life, for Medha, Brahmi and Shankushpi are prescribed. In the fifth decade of life, Tripla and Jyotishmati is prescribed. In the second decade of life, one should have Ashwagandha and Shatavari. In the seventh decade of life, Amlaki, Bala and Ashwagandha are prescribed. In the last 2 decades of life, one should have Brahmi, Shankhapushati, Kronchbeej, Bal and Sahjar. That means one can have different formulations from these drugs in their respective decades of life. कुछ रसायन औषध बताए गए हैं जो कि टिश्यू नरिशिंग है, स्पेसिफिक टिश्यू नरिशिंग. There is explanation of the 7 धातुस in Ayurvedic text. So a sports person, जितना भी हम स्पोर्ट्स पर्सन की बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो दे आर बेसिकली मास मेड एंड अस्थि सार पुरुषा. So they should have Bala, Nagbala, Shalparni. For Medha Dhatu, Gugul, Shilajatu, Amrita and Haritki. For Asthi Dhatu, Vanshlotion, Laksha, Shukti Chunk are prescribed. For Majja Dhatu, nourishment, Loh, Vasa and Majja are prescribed. The few rasayan minerals and the metals are also prescribed like Swarnabhasam for immunomodulation and anti-inflammatory role, Rajat Bhasam, that means the silver, for combination and memory enhancement, Abhras Bhasam acts for micronutrient and trace element, Vakrant Bhasam, it acts as micronutrient and in the form of trace element it is required in the body. Yashad Bhasam is the best source of zinc. Shilajatu has immunomodulation and the anxiolytic action. Chawanprash is also most commonly used to science. Everybody knows about it. It is a formulation of multiple herbs जिसमें जीवनीय और बेहनीय गण के, हमने जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, जीवनीय, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकुली, क्षीर काकुली और बेहनीय द्रव्य जो कि स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, उन सब ड्रग से इस फॉर्मुलेशन को बनाया जाता है. लाइक नागरमोथा, कुष्ठ, हल्दी, दारू हल्दी, चिरबिल, एंड ऑल्सो द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट और सोर्स ऑफ विटामिन सी, आंवला.
So almost 36 herbs plus 4 other माइक्रो एलिमेंट्स के साथ इस फॉर्मुलेशन को बनाया जाता है. इट हैज अ इम्यूनोस्टिमुलेटरी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट. इट एनहांसेस द कोग्निटिव फंक्शंस, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी. In fourth person, several bhasmas can be added to this Chyawanprash as per their body requirements or consumption, like Swarn Bhasam. In children, one can add Rajat Bhasam for cognitive and intelligence. It is one best Shilajit. It is also Shilajit is also a best Rasayan drug prescribed mainly for the male sports person. It has a good nootropic agent, anxiolytic, antioxidant effect, ovogenic and spermatogenic effect, most common among athletes to promote the vitality and strength. There are also few examples of Rasayan drugs which can be given to sports person, like आंवले की रसायन. इसे 1 से 3 ग्राम दूध के साथ दिन में 2 बार ले सकते हैं. ब्रह्म्यूग्रेट कोग्निटिव और मेमोरी पर इसका बहुत अच्छा, कोग्निशन पर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं. स्ट्रेस रिलीवर है, बहुत अच्छा. 12 से 24 ग्राम दूध के साथ सुबह शाम इसे छोटे कप दूध के साथ ले सकते हैं. वसंत कुसुमाकर रस, महालक्ष्मी विलास रस, अगस्त्य हरित. But one should take these Rasayan drugs only on the prescription of Ayurvedic consultant only, because these should also, मतलब जो ये रसायन औषधियाँ ये भी हमें प्रकृति को देखकर ही स्पोर्ट्स पर्सन को देनी चाहिए. तो अगर इस तरह के रसायन औषधियाँ एक आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से प्रॉपर गाइडेंस के अंदर ली जाएं तो इट हैज अ बेनिफिशियल रिजल्ट फॉर द फिटनेस ऑफ द बॉडी. साइकोलॉजिकल फैसिलिटीज के लिए भी कुछ रसायन औषधियाँ बताई जाती हैं जो कि मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करती हैं, एंजाइटी को रिलीव करती हैं, जैसे कि जटामानसी, यष्टि मधु, ब्रह्मी एंड सर्पगंधा. ये मेमोरी इन्हेंसर्स हैं, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, रिटेंशन पावर को इम्प्रूव करते हैं, स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं. तो वेरियस इंडिकेशंस दी गई हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, एमनेजिया है, अदर स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनमें इन ड्रग्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है. तगर, अश्वगंधा, कपिकच्छु एंड मेंडूकपर्णी आर आल्सो वन ऑफ दीज ड्रग्स. ओवरऑल हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए कुछ रसायन औषधियाँ जो इजीली अवेलेबल हैं, जैसे कि आम्लकी है, गिलोय, अश्वगंधा, पिदारिकन. So, last I will come to the conclusion how sports medicine, Ayurvedic sports medicine can help the sports person, as it is a newly evolved promising branch in the field of Ayurveda. Panchakarma contributes a lot to this field. It helps in improving the physical and mental fitness, enhances the performance in the field and to prevent sports-related injuries as well as illness and promote the rehabilitation. It helps in handling the acute and chronic injuries in the field except major surgical conditions. Diet and Rasayan drugs mentioned in the Ayurvedic text enhances the nutrition and promotes the physical well-being required for the sport. ठीक है, ये जो पार्ट है डाइट एंड रसायन ड्रग्स, this plays a very important role in enhancing the medical fitness of a sports person. So in fact, the integrated approach of a modern sports medicine, physiotherapy, along with the holistic science of Ayurveda, plays a milestone in the field of physical medicine. Thank you all of you for patientful listening. Thank you, ma'am. Thanks a lot for accepting our invitation. It was a wonderful presentation. I hope everybody is benefited from your presentation, and I hope they'll think out of box, and this is a new area where they can explore and have research, where whether it is weight management, whether it is muscle development, or many more aspects of sports. Thank you
the way you presented things, it was wonderful. Thanks, Okay. thanks a lot. If Welcome, sir. anyone has some question, they can ask. यस सर, नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार सर। हाँ मैडम, मैं मुकेश चौधरी बोल रहा हूँ आईटी रुड़की से। हाँ जी सर। ये मैडम, स्पोर्ट्स पर्सन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, जो इंजरी आता है, मैक्सिमम हमारे नी में आता है। यस सर। तो इस नी प्रॉब्लम का कोई अगर सॉल्यूशन इसमें है कि क्या Yes, sir. इसके लिए ट्रीटमेंट? Yes, sir, different type of injuries. I have earlier told that basically जब भी नी से related injuries की हम बात करते हैं तो patellar injuries या ligamental injuries होती हैं जो कि chronic pain में convert करती हैं patient को, और basically they hampers the performance of an athlete or a sports person. तो हमारी साइंस में बहुत सी ऐसी इंटरनल मेडिकेशंस हैं जो कि इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में रोल प्ले करती हैं। और सेकेंडली आई हैव मेंशन्ड द जानुवस्ती प्रोसीजर इन द स्लाइड आल्सो। जानुवस्ती, या वी ट्रीट द, इट्स अ काइंड ऑफ ऑयल थेरेपी। हम नी को ऑयल थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, साथ में ओरल मेडिकेशंस ऑफ गुगुल एंड अस्थि श्रृंखला आर गिवन, जो कि टिश्यू हीलिंग में हेल्प करती हैं, अर्ली टिश्यू हीलिंग में। और कुछ मेडिकेशन प्रोसीजर्स हैं जानुवस्ती के साथ सुडेशन थेरेपी, तो जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी को रिगेन करने में स्पोर्ट्स पर्सन के हेल्प करते हैं। तो दीज प्रोसीजर्स आर आल्सो एडवाइजेबल। और कुछ पेशेंट्स आते भी हैं हॉस्पिटल में, स्पोर्ट्स पर्सन, इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ, और अच्छे रिजल्ट हैं इस तरह की इंजरीज में। तो इस जरूरी नहीं है कि सभी इंजरीज में हमें पेशेंट को सर्जरी के लिए ही आगे फर्दर एडवाइस किया जाता है। नी जॉइंट या लिगामेंट इंजरीज में इस तरह के पैरा पंचकर्मा प्रोसीजर्स आर वेरी हेल्पफुल इन दिस। एक्चुअली मैडम, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका ये कहते हैं कि अब तो नी ट्रांसप्लांट या फिर नी सर्जरी, यही दो ऑप्शन बताते हैं। Knee transplantation is a different aspect. When the complete there is a limitation of the joint space, complete की joint restriction हो गई, लेकिन अर्ली स्टेज में जब पेशेंट को इंजरी हुई थी एंड इट हैज नॉट, मतलब हम बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा टाइम उसे नहीं लगा है, क्रॉनिक फेज में वो नहीं मूव किया है, तो टिश्यू हीलिंग के बहुत से एस्पेक्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन से हमें देखने को मिलते हैं। तो आयुर्वेदा एक ऐसा फील्ड है जिसमें लोग बहुत निराश होकर लास्ट में आते हैं, बट द रिजल्ट्स आर वेरी बेनिफिशियल इफ दे टेक कंसल्टेशंस इन देयर अर्ली स्टेजेस। एक बार मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट करूं मैम आपकी ही स्टेटमेंट को, और अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की इंजरीज हैं तो आयुर्वेदिक जो थेरेपीज हैं दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल, स्पेशली ग्रेड 1 की इंजरीज में। अगर मैं लिगामेंट की बात करता हूँ, ACL, पर इन केस अगर इफ इट इज कंप्लीट रप्चर एंड इफ इट इज अ ग्रेड 3 इंजरी, देन ओनली देयर इज अ सर्जरी इज द सॉल्यूशन। तो आप वाली बात ठीक है कि ग्रेड 1-2 की इंजरी में मतलब आयुर्वेदा की जो इम्पोर्टेंस है वो काफी अच्छी साबित हो सकती है। यस सर। हाँ जी, कोई और सवाल? हम सिर्फ 2-3 सवाल लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी 10 मिनट ऊपर चल रहे हैं। और सवाल कोई? योगेश सर नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। एक तो पहले इज वेरी नाइस प्रेजेंटेशन टुडे, और एक नया हमें एक इंफॉर्मेटिव न्यूज मिला। मैम एक्चुअली मैंने भी 2 बुक प्रेफर की हुई हैं, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रहालय, जो भागवत जी ने लिखे हैं। यस यस सर। हेलो। हाँ जी सर, आ रही है मैम आपने बोला कि आ रही है। मैम ऐसे कब प्रकृति का जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग ज्यादा रहता है, थोड़ा मोटा होगा, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म कम होगा। जो प्रति प्रकृति का लोग है वो थोड़ा सा एथलीट बॉडी टाइप ज्यादा रहती है ना मैम? एक्टिव। और जो बात प्रकृति का हाँ एक्टिव होगा, और जो बात प्रकृति का है वो थोड़ा चंचल होगा। मैं सही बोल रहा हूँ ना मैम? थोड़ा क्वेश्चन निकल के आएगा मेरा यहाँ से। हाँ जी। ब्रीफ एक्टिविटी होंगी। तो मैम अब इसको एक्चुअली ये हमारे पास अवेयरनेस बहुत कम है। एक्चुअली वी आर नॉट यूजिंग दिस टाइप ऑफ रिग्रेशन, एक तरह का हम यूज नहीं करते हैं, है ना मैम? हाँ जी सर। तो सपोज आई एम जस्ट belong to the bath prakriti, then I choose some strengthening game, so I can convert my prakriti in the cup prakriti and maybe pit prakriti.
No, sir. प्रकृति is Okay, ma'am. unchangeable. You have, मतलब हम प्रकृति के बेस पे अपना गेम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हम प्रकृति को चेंज कर अपना गेम कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें किस फील्ड में मूव करना है. इसलिए ये एथलेटिक टैलेंट को इवेल्युएट करने में अर्ली रोल प्ले करता है कि किस फील्ड में कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है. इफ आई विल टेल अबाउट द चेस गेम, तो अगर हम चेस गेम देखें तो इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है. इसमें मैं आपकी ही बात को सप्लीमेंट करूंगा डॉक्टर नेहा. कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में जिस तरह से हम मॉडर्न साइंस में जो शिल्डन का 7 पॉइंट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, सिमिलरली ही मैं पार्टिसिपेंट की जानकारी के लिए बता दूं, आयुर्वेदा में भी एक दशविध परीक्षा होती है. तो उसमें भी अगर आगे हम काम करना चाहें तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए या बॉडी टाइप्स के लिए एक या आपके चीजों को जानने के लिए ये दशविध परीक्षा का भी एक पैरेलल आप कंपेयर कर सकते हो, जो मॉडर्न साइंस में हम शेल्डन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज में भी एक दिन शायद कोई पार्टिसिपेंट बीच में कह रहे थे कि जी मॉडर्न ज्ञान जो है वहीं से आया. और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये शेल्डन का जो बॉडी क्लासिफिकेशन भी जो है वो सारा का सारा अगर जो बेसिस आप देखेंगे, ये सब का सब बेसिस जो है दशविध परीक्षा से ही उसका बेसिस है. बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. बहुत सी जो इंडिया का जो बेस, जो जितनी भी हमारी दुनिया में साइंस है ना, उसका बेस तो इंडिया. हेलो. थैंक यू. विद दिस आई होप प्लीज, अगर हम ऑलरेडी जी 10 मिनट ऊपर चल रहे हैं, मेरा सभी पार्टिसिपेंट्स से अनुरोध है कि अगर आपके सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें. उनका आंसर मैं डॉक्टर नेहा से जो मिलेगा आपको रिप्लाई कर दूंगा. विद दिस वी आर फिनिश्ड विद दिस पर्टिकुलर सेशन. थैंक्स अ लॉट डॉक्टर नेहा फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन, एंड आप हमारे इस रिफ्रेशर कोर्स का पार्ट बने. और हमारा सौभाग्य है कि आपने आयुर्वेदा और स्पोर्ट्स को एक कड़ी के रूप में हमारे पार्टिसिपेंट्स के सामने रखा, और पॉसिबिलिटीज जो है आगे एकेडमिक डिसिप्लिन की, उसके लिए आपने हमें एक नई दिशा दिखाई. और मुझे ये भी उम्मीद है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो लाभान्वित होंगे आपके इस प्रेजेंटेशन से. थैंक्स अ लॉट मैम ऑन द पार्ट ऑफ Bhagat Phul Singh Mahila Vishwavidyalaya as on